Hello, 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 hello. Check 1 2 3. चली चली चल पड़ी। आने दो आने दो आने दो सबको आने दो। पर सबसे पहले ऑडियो ऑडियो थोड़ी कम। और कंट्रोलर कहाँ गया मेरा? और बार कनेक्ट करना भूल जाता हूँ। अब मेरे को ये बताओ कि मैं शुरू से खेलूं, स्टार्टिंग से बिल्कुल स्टोरी एक्सप्लेन। भाई भाई तो मैं बोल रहा हूँ मैं शुरू से खेलूं, सबके लिए शुरू से खेलूं, क्योंकि कल भाई मैंने खेली मेरे को खुद नहीं समझ आई है, मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा। अगर मैं शुरू से खेलता हूं तो शुरू से ही खेलते हैं यार। मेरे भी सिर के ऊपर से गई थी आधी आधी चीजें कल। वो अपने में भाई कुछ कुछ बोल के चल जाती है और उसको पता लग जाता है। मैं शुरू से कर रहा हूँ स्टोरी मोड में। नॉर्मल में भाई मरते ही नहीं, हार्ड में कैसे मरेंगे? नॉर्मल में मैं भाई तेरा नेट नहीं है भाई, ये मेरा भी मर रहा है। यूट्यूब है पागल, मेरी भी हो रही है बफरिंग। हो जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है? इन्हें अभी अभी शुरू करी। चलो भाई शुरू से शुरू करते हैं। अभी एक चीज देखना तुम अभी। Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. ग्राफिक्स देखना यार इस गेम के। In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. मैक क्या जाएगा भाई, मेरा लैपटॉप जाएगा, फट जाएगा ये। मैक्स तो 4090 भी नहीं कर सकता इस गेम को।
भाई ये मेरे को पहले पता ही नहीं लगा ये कौन है। ठीक, मैंने सोचा वो जो पहली गेम में लाल जैकेट वाला उसका दोस्त था एलन वेक का, वो है, पर वो नहीं है ये। नंगा भाई नंगा चला हुआ है। तो आगे से देख सकते हैं। नहीं यार, यार मोटा है तब नहीं देख सकते। वही तो भाई, ये डार्क प्लेस से आया अभी ये निकल के बाहर। क्या हॉरर भाई, डरा देते हैं ये। यार एक इतनी इतनी डिटेल्ड है ना इसकी। हाथ कांप जाते हैं भाई, कंट्रोलर वाइब्रेट जाते हैं जैसे जंप स्केयर आता है। तेरी आवाज कब बदली, क्या मतलब? ये मैंने फिल्टर लगाए हुए हैं। पतली आ रही है, मोटी आ रही है कि क्या है, कौन ये? लेकिन वही तो भाई, वही तो पता लगेगा आगे स्टोरी में। मैं दे दूं स्पॉइलर, दे दूं? बस ये है जानने की बात कि ये नहीं है वो एलन वेक का दोस्त। आवाज़ ठीक आ रही है ना, खराब नहीं आनी चाहिए बस। अभी देखना भाई, ये सीन आएगा, खतरनाक ही सीन होगा, अभी देखना। भाई मिसी ओ भाई, नहीं भाई, एलन वेक नहीं है भाई, मग्गी कर दिया इसको तो। देखना इतनी डिटेल्ड है भाई ये गेम ना। दिल ही निकाल दिया भाई बंदे का। स्टार्टिंग ही ऐसी है इस गेम की। ये होते हैं मर्डर सॉल्व करने वाले। Hey kiddo, how are you? I'm good, Mom. How are you?
मेरी नहीं हो रही बफर This यार, trip might take a little longer इधर than I से नहीं हो thought. रही। I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault. People get all murdery. What happened? अगर मैं वो कम कर दूं, बिट रेट कम कर दूं तो फिर गेम थोड़ी धुंधली सी हो जाएगी। देख लो, अब मैं कम कर दूं, थोड़ी कर कम करूं मैं बिट, रुक मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, कर सकता हूं। बिट रेट कम कर दूं मैं थोड़ा ना, फिर नहीं होगी। 10,000 कर दूं, 12 से नहीं, डिफरेंस नहीं पता लगेगा इतना। मेरे इधर से तो 0 ड्रॉप फ्रेम्स हैं। अगर लगेगा कि, अगर लगेगा ना कि धुंधली सी हो गई तब बोलना, तब मैं ज़्यादा कर दूंगा फिर से। Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. ये दोनों पुलिस वाले होते हैं, मर्डर सॉल्व करने आ रहे होते हैं ब्राइट फॉल्स, जो भी हो रहे हैं, मतलब ये जो हुआ अभी। Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. ये दोनों सेम टाइम पे कॉफी पीते हैं हर कट सीन में। It can't be a coincidence that another body turns up just as we कौन arrive था in वो town. नंगा भाई? वो था Feels like the killer. नाइटिंगेल, याद है? FBI एजेंट नाइटिंगेल, जो वो मैन्युस्क्रिप्ट ढूंढ के एलन वेक को पकड़ने आया था गेम के शुरू में, एलन वेक 1 में, जिसको वो कौवे लेके चले गए थे। Is leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take a गोल्डन लेक, हाँ वही तो है भाई, as the backup. वही तो है मेन जगह, उसी में तो जाएंगे हम। Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. भाई ग्राफिक देखिए, कट सीन नहीं है, ये गेम ही Here we ऐसी। are, memorizing before we get swallowed up by the trees. मैं इमेज शार्पनिंग ऑन करना भूल गया यार। I should take a look at that map. रुको एक सेकंड। अच्छा, मैं अभी पुराना सेव खेल सकता हूँ 4 मिनट्स अगो। चल खेल लेते हैं थोड़ी देर। भाई वो यार कैसे समझाऊं अब मैं, वो जिसको मैन्युस्क्रिप्ट मिल गई थी एलन वेक की, उसको लगता है अब उसकी पत्नी को उसने मारा है, उस FBI एजेंट को शुरू में लग रहा था। वही तो भाई I ग्राफिक इस think I गेम hear के। someone. I'm not walking all the way back Could be down. our deputy. और मेरे FPS कितने आ रहे हैं अभी? Hey, over here. FPS इन दिखा रहे तो 60 आ ही रहे हैं। YouTube है भाई, ये करता रहता है बीच बीच में बस। Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? हाँ, मेरे खुद की भी हो रही थी, तो नीचे मैं खुद भी लगाई हुई है साथ में। Saga Anderson. YouTube I'll be करता ही leading this रहता है। case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, man. 10 सेकंड पीछे I'm देख ले, Deputy Mulligan. फिर नहीं I होगी। just figured that, you know, that, कर ले भाई, कर ले।
30 FPS में खेल लेना चाहे पर DLSS ऑन करके। My partner Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, cried Thornton. But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I want to see the body. भाई बॉडी देखना यार, बॉडी देखना sure, भाई। that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. और इसका एलेक्स केसी का मॉडल यार, ये मैक्स पेन है, सैम लेक। Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. इतना सुंदर आदमी है ना ये। Clues clearly. इसमें MC एलन नहीं है भाई, ये आएगा अभी वो। आधे तेरी आवाज ऐसी लग रही जैसे पता नहीं कितना रीफ लड़का कर रहा स्ट्रीम। ऐसा क्या हो गया भाई, ऐसा क्या हो गया दोस्त, अब मैं क्या बोलूँ, माइक में घुस के बोलूँ, ऐसे ASMR करूँ। माइंड प्लेस में आ सकते हैं भाई इस गेम में। Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. I see. Already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. यार ग्राफिक्स यार, और ये तो अभी मैं शार्पनेस भी ऑन करके नहीं आया हूँ। Gives me a headache. There's too much sky. माइंड प्लेस मतलब इसका दिमाग, हाँ भाई माइंड प्लेस मतलब इसके दिमाग के अंदर घुस सकते हैं और उधर भाई क्लूज जितने भी हमने इकट्ठा किए होते हैं वो सारे लगा सकते हैं बोर्ड पे, असली क्राइम उसकी तरह, जैसे क्राइम शोज में नहीं होता वो लाल रस्सी लगा के फोटो पे फोटो लाल रस्सी, वैसे कर सकते हैं। Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. ऐसे स्पाइडरमैन भाई। Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. ट्रैफिक देखो यार तुम। Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? भाई ये सारी जितनी भी दिख रही है ये सॉफ्टवेयर ट्रेसिंग है। क्या लाइटिंग है इस गेम की। How much clearer can I make it, Mulligan? Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service. मैं FSR ऑफ ही कर रहा हूँ यार, खेल लूँगा थोड़े कम FPS में। Ready to get this case solved.
And the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Thornton, he's joking. Let's just see this body, shall we? This is the scene of the crime. We found him on the table. We didn't touch देखना भाई. you know, procedures and... Thanks, lady. No tarp. You owe me एजी a coffee. सीखता हूँ जाऊँ मैं. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? इतनी डिटेल्ड क्यों है यार? ये थोड़ा ब्लर तो कर देते. Body is positioned on the table. Ritualistic. ऐसे आ सकते हैं माइंड प्लेस में Another चीजें body रखने. turns up just as we arrive in town. Coincidence? The killer left the heart. दिल ही against the निकाल body. दिया होता है भाई. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. क्राइम सोल्व कर रहे हैं Heart भाई removed हम. from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. CID गेम. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. कुछ तो गड़बड़ है दया. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. देखो यार इसका दिल निकाला गया था. तो भाई दिल कौन निकालता है? दिल सिर्फ लड़कियां निकालती हैं भाई. मर्डर करने वाली एक महिला थी. Multiple people were here. Multiple killers? तो ये गेम वाला भाई दुख तो ये है गेम वाला की. गेम वाले की भी बड़ी है. क्या बड़ी है भाई? ये बड़ा है. ये बड़ा ये बड़ी है. क्या बात कर रहा है यार? तो फिर तो भाई अगर ये बड़ा है तो फिर तो मेरे पास तो भाई कैनन है भाई. तोप है फिर तो मेरे पास. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. भाई फिर भी तुझे पूरा यकीन है ये बंदा ग्रोवर होगा, शोअर नहीं? क्या पता शोअर हो इतना ही हो. Was he killed here or brought here after? For display. Learn more about the victim, learn more about the killer. अच्छा. Large amount of blood on the table. The victim died here. Large amount of blood on the table. Boot prints indicating multiple killers. Quite the party.
क्या पता भाई, मेरे को तो हो रही स्मोक। भाई साइज डिपेंड नहीं करता यार। बल्कि भाई ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और लेटर क्यों, मेरे को लगाने दो ना फोटो। एक फोटो इसका भी खींचना था यार। क्या करना है अब इधर? देख नहीं लिया। 1 2 3 4 5 कहाँ है? अच्छा Any इसलिए। idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. देखा I नाइटिंगेल। haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale. Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. नाइटिंगेल आया होता है भाई इधर एलन वेक को पकड़ने, और उसको वो ले जाती है, डार्क प्रेजेंस ले जाती है 13 साल पहले, और वो अभी निकला बाहर, बिना इसका दिल ही निकाल दिया। और So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. इसकी शक्ल तो देखो, गीगा So चैड। what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. साइड बाय साइड सेकिरो खेल रहा भाई, I सेकिरो think हुई that's नहीं everything. मेरी। For now, at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. अब हम जाएंगे केस बोर्ड पे अपने। भाई इसकी शक्ल देख भाई, गीगा चैट भाई म्यूइंग करता है ये बंदा 24 घंटे। ठीक, वो चूस ले भाई, पीनट बटर चूस ले तो स्ट्रो से। Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? क्योंकि डार्क भाई, एक बात बताऊं मैं, इतनी सार अच्छा नमकीन है तो भाई। Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. ये वाला पार्ट कर लूं भाई, फिर एक बात बताऊंगा। Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. ये वाला पार्ट बोल रहा था मैं, अपने दिमाग में कुछ कुछ सोचती है भाई, इसको पता लग जाता है क्या करना। Not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off.
But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale, a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. वही तो भाई, ये देखती है, फोटो देखती है और इसको पता लग जाता है भाई कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ एकदम से ही। मेरे ख्याल से इसको एलन वेक बता रहा होता है शायद, या फिर इसको डार्क प्लेस बता रहा होता है, ऐसा होता है कुछ। बफर हो रही है। शायद। पर भाई मैं बोल रहा था ना, मेरी हो रही है कि वो कंट्रोल का पार्ट होता है इसमें यार। एफपीसी याद है कंट्रोल की, फेडरल ब्यूरो ऑफ कंट्रोल, वो होते हैं भाई इस गेम में। उनको पता, उनको 3 साल पहले उनको डेट आती है ना एक कंट्रोल, मतलब वो वर्ल्ड इवेंट की, कि कुछ हो रहा है ऐसा इधर इस जगह पे जहाँ पर अभी हम हैं। पोलारिस तो नहीं है, क्या पता भाई, हो सकता है भाई, हो सकता है। पर उनको पता लगता है ना भाई कंट्रोल में कि इस जगह पर 3 साल की कब आई थी कंट्रोल, जब भी आई थी 3-4 साल बाद की डेट आती है उनको कि इधर कुछ हो रहा है। वो बोल देते हैं कि डेट गलत आई है, ये फ्यूचर की कैसे बता सकते हैं। और फिर इस गेम में भाई जब की डेट बताई होती है एग्जैक्ट वही डेट, कंट्रोल की डेट बताते हैं इसमें। अभी बताएंगे, उधर आएगा एक पार्ट आएगा जब एफबीसी वाला वो ठीक कर रहा होगा, एक चीज़ ठीक कर रहा होगा, उसमें सेम वही डेट। The lake is पूरी connected connected to है भाई। Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. 19, हाँ तो बस उसमें 4 साल बाद की डेट बताते हैं इन्होंने भाई। इन्होंने 4 साल पहले वो किया था, बना के रखा था कि हम 4 साल बाद ही रिलीज करेंगे एलन वेक 2। उस गेम में बोलते हैं फ्यूचर की डेट बता रही है ये मशीन, और इस गेम में वो फ्यूचर की डेट होती है। Hear what you put together so far. Sure. क्या गेम है यार। It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him. पॉसिबली न्यूड क्या मतलब? पॉसिबल दिख नहीं रहा Cut वो। his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out ग्राफिक yet. देखो यार। Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got वही तो भाई, स्क्रीन में भी नहीं आ रही मेरे तो। the creeps. You need to get out more. इतना बड़ा पेड़। It is kind of creepy though. दूर से देखो तो रियली लगती है ये गेम यार। और ये जो बंदा नहीं है, ये एलेक्स केसी, ये एलन वेक की स्टोरी का एक कैरेक्टर है, मतलब पर असली में भी यही नाम है। ये बोलता रहता है कि एलन वेक ने मेरी वो मजाक बना दिया मेरा नाम लेके। और यही वो है, मैक्स पेन का मॉडल है यही, और सेम वॉइस एक्टर भी है। Tracks. Barefoot. मैन्युस्क्रिप्ट का पार्ट। Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. There's a piece of paper on the ground.
A page full of text on one side. Alan Wake की Not a manuscript. printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. The killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down